Good morning to all students. Students, today we are going to solve question number 19, page number 110 from our BK textbook. Now this is solved question from our BK textbook. But before beginning of this question, I would like to inform one printing mistake which is made in our BK textbook. Now this printing mistake is made in receipt and payment account. Actual amount of subscription is 1,300,000 and by mistake it is given 1,03,000. सब्सक्रिप्शन का जो एक्चुअल अमाउंट था वो है 1,03,000 और आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है 1,03,000. ओके, सो वी विल डू करेक्शन ओवर हियर इन सब्सक्रिप्शन. Amount of subscription is 1,03,000. I hope everybody will make correction in your BK textbook. Let me start with our question. This is question number 19, page number 110. From the following particulars relating to Sushma Memorial Hospital, Jalgaon, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Now here we have given receipt and payment account for 31st March 2020. Okay, so our year ending is 31st March 2020. So first of all we will write current year. Okay, here we will write current year CY. Now you can see here our receipt and payment ends on 31st March 2020. Okay, so current year will be 2019 and 2020. Okay, so here we will write current year 2019 and 2020. Okay, now what will be our last year? हमारा last year क्या होगा? एक साल पीछे जाना है. So our last year will be 2018 and 2019. Okay, and what will be our following year और next year? हमारा next year क्या होगा? Current year के बाद जो साल आता है उसे कहा जाता है next year. Okay, so next year or following year will be 2020 2021. Okay, so we will read receipt and payment account. First we will read receipt. Okay, now receipt can be transferred in income side or in liability side. Okay, first is to balance brought down. Now it's a opening balance. It's a opening balance of cash. Okay, now opening balance of cash we cannot count. Okay, because opening balance of cash was closing balance of cash in last year. ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था. ओके, और इसके वजह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया जाता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया जाता है, वो हमें काउंट नहीं करना है. दैट्स व्हाई आई हैव कैंसल हियर. ओके, नाउ सब्सक्रिप्शन, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन will be transferred to income side. Subscription is our revenue income. Okay, so it will be transferred to income side. Entrance fee, now in bracket revenue is given. Entrance fee in bracket they have mentioned revenue, so it will be transferred to income side. Any type of revenue income or any type of revenue receipt will be transferred to income side. Okay, so here I will write I for entrance fees. Life membership fees in bracket revenue is given. Life membership fees are revenue. Life membership fees are revenue given. Now life membership fees which we have received will be transferred to income side. ये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? Income side को ट्रांसफर करेंगे. Okay, so here again I will write I for life membership fees. Next is sale of old newspaper. Okay, so sale of old newspaper
will be our income. It will be transferred to income side. Next is donation for building fund. Now you can see here we have received donation, but it is received for building fund. Okay. Now if donation is received for specific purpose, अगर donation किसी specific purpose के लिए आता है, so it will be our liability. Okay. And if donation is received for general purpose, अगर डोनेशन हमें जनरल पर्पस के लिए आता है तो वो हमें ट्रांसफर करना है इनकम साइड. ओके. बट इफ डोनेशन इज रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, व्हाट इज बिल्डिंग फंड? फंड विच इज क्रिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो फंड क्रिएट किया जाता है उसे कहा जाता है बिल्डिंग फंड. ओके. नाउ हियर वी हैव रिसीव्ड डोनेशन फॉर व्हाट पर्पस? फॉर बिल्डिंग फंड और फॉर construction of building. So we have received donation for specific purpose, and that's why we can transfer donation in liability side. We cannot transfer donation in income side now. Okay. If only donation is given, then we can transfer donation in income side. Okay. But if donation is received for specific purpose, then it will be transferred to liability side. Okay. So here we will write L, liability. Now we will do posting of payment side. First is furniture. Now furniture is a capital expenditure, okay, and that's why it will be transferred to asset side. So here we will write A. Furniture is our asset. Medicine. Now for hospital, medicine will be revenue expenditure. Yes, hospital के लिए medicine रेवेन्यू पेमेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड. Honorarium to the doctors. Now honorarium given to the doctor. What do you mean by honorarium? Honorarium means fees paid to the doctor or payment given to the doctor. It is also revenue expenditure. Okay, and that's why it will be transferred to एक्सपेंडिचर साइड. हॉनरेरियम का मतलब होता है डॉक्टर को किया गया पेमेंट. ओके. सैलरी टू द स्टाफ, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके. सो इट विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड. जनरल एक्सपेंसेस, इट विल बी आल्सो ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड. नेक्स्ट इज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज असेट. इट इज एक्सपेंडिचर मेड ऑन असेट. इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके. हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं ऑपरेशन के लिए या अलग अलग पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके. एंड दैट विल बी द असेट फॉर द हॉस्पिटल, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी ट्रांसफर टू असेट साइड. नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट ऑन 31st March 2020. नाउ फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ asset. Okay, any type of fixed deposit is a asset, and that's why it will be transferred to asset side. Next is buy balance carried down. Now it's a closing balance at the end of the year of cash. This is closing balance of cash. It will be transferred to asset side. Okay, so here we will write A. Now we have done posting or we have done marking of all receipts and payment. Now we will see additional information. Now you can see here additional information is divided into two columns. Okay. First is 1st April 2019 and second is 31st March 2020. Now 31st March 2020 is our current year. Our current year ends on 31st March 2020. Okay. So ये जो अमाउंट दिया है सेकंड कॉलम में वो करंट ईयर का अमाउंट है. ओके. सो हियर वी विल राइट CY and amount which is given on 1st April 2019. This is amount of last year. ये पिछले साल का अमाउंट है. ओके. सो हियर वी विल राइट LY. Okay. So this is additional information of last year. Why last year? Because date is given 1st April 2019. Okay. So it's a opening balances are given here. Okay.
opening balances means balances which are given on 1st April. Okay. Now closing date will be closing date of last year will be 31st March 2019. Okay, and opening date is 1st April 2019. So we have given additional information of last year as well as current year. Now we will read additional information one by one. First is outstanding subscription. Now here outstanding subscription of last year is given and outstanding subscription of current year is given. Okay, दोनों साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे दिए हैं. पिछले साल का भी दिया है, लास्ट ईयर का भी दिया है, करंट ईयर का भी दिया है. ओके, सो वी विल गिव और वी विल मेक मार्किंग ऑफ नंबर 1 ऑन सब्सक्रिप्शन. ओके, सब्सक्रिप्शन के आगे हमें 1 नंबर का मार्किंग करना है. देन second adjustment or second additional information is also related with subscription. Subscription received in advance. Okay, we have received subscription in advance. In last year, advance subscription is 8,000 and in current year, advance subscription is 6,000. Okay, so here again we will give 2 number to the subscription. Subscription को हम 2 number की marking करेंगे. Okay. After that, next additional information is building. Now, as per last year, value of building was 13 lakh. पिछले साल के मुताबिक हमारे पास बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 13 lakh. And for current year, value of building is also 13 lakh. Okay, so value of building is same. ना तो बिल्डिंग बड़ा है, ना तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो चुकी है, वो एज इट इज है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. ओके, तो यू कैन सी हियर इन पेमेंट साइड वी हैव नॉट मेड एनी एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग. हमने बिल्डिंग के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं किया है. ओके, सो अमाउंट ऑफ बिल्डिंग इज सेम इन लास्ट ईयर एज वेल एज इन करंट ईयर. ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. नाउ इन लास्ट ईयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 2 lakh. Opening balance of investment is 2 lakh. Okay, and at the end of the current year, closing balance of investment is also 2 lakh. Okay, so during the year we have not purchased any investment. आप ऊपर देख सकते हो पेमेंट साइड में हमने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट को परचेज नहीं किया है. सो हमारा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का सेम है. दैट मीन्स वी हैव नॉट purchase or we have not sold investment during the year. Okay, so both additional information, building and investment, it is just for our information. ये हमारे information के लिए दी गई है. Okay, next is capital fund. Now as per opening balance, capital fund was 10,13,000. Now this capital fund we will transfer to liability side. And in second year, that means in current year, question mark is given. That means we have to find out amount of capital fund. After solving all adjustment, we will find out amount of capital fund. Okay. Now this capital fund, opening capital fund, we will transfer to liability side. And closing capital fund, we will find out after solving all adjustment. And that's why question mark is given in second year column, that is in current year. Now next is building fund. As per last year balance or as per opening balance, amount of building fund is 5 lakh. Okay, we will transfer that building fund in liability side. Okay, ये जो आपको बिल्डिंग फंड दिया है लास्ट ईयर के बैलेंस के मुताबिक या जो ओपनिंग बैलेंस है उसके मुताबिक 5 लाख रुपीस है, जिसे हम लाइबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे. ओके, and for second year or for current year, question mark is given. That means we have to solve adjustment relating to building fund. Now you can see here we have received donation for building fund. हमें building fund के लिए 1,50,000 donation मिला है. Okay, so directly we will add this donation in building fund. जो हमारे पास building fund है 5 लाख रुपीस ओपनिंग बैलेंस है, उसमें ये हम डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड
ड्यूरिंग द ईयर हमें जो रिसीव्ड हुआ है वो हमें क्या करना है, ऐड करना है. ओके, सो दैट इज हाउ वी हैव टू सॉल्व ऑल एडिशनल इंफॉर्मेशन which are given in the question. One by one we will start solving all additional information. So first of all we will solve adjustment related to subscription. Okay, now first adjustment is related with subscription. Outstanding subscription. Now outstanding subscription for last year is 9,000. पिछले साल का outstanding subscription दिया हुआ है 9,000. And subscription for outstanding for current year is 10,000. Now for last year we will give only one effect. And for current year outstanding subscription we have to give two effect. Now first of all we will write this subscription in income side. रिसिप्ट साइड में जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1,03,000 that we will transfer in income side. So here in income side we will write by subscription received during the year, during the current year. Now during the current year we have received subscription of rupees 1,03,000. 1,00,300. Okay. Now we will read additional information. ये जो हमने करंट सब्सक्रिप्शन लिखा है वो करंट ईयर का है जो हमें रिसिप्ट साइड में दिया है. ओके, सो वी हैव पोस्टेड दैट सब्सक्रिप्शन इन इनकम साइड फर्स्ट. नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट is related with outstanding subscription of last year. पिछले साल का सब्सक्रिप्शन हम क्या करेंगे, इनकम साइड से माइनस करेंगे बिकॉज दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ लास्ट ईयर. ये पिछले साल का हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम था. ओके, इट इज नॉट द इनकम ऑफ करंट ईयर. ये करंट ईयर के इनकम से रिलेटेड नहीं है. ओनली वी कंसिडर इनकम, सॉरी वी कंसिडर those income or those expenditure which are related in current year in income and expenditure side. current year से related जो भी income है, जो भी expenditure है, वही हमें current year के income and expenditure account में show करना है. Okay, and that's why outstanding subscription of last year we will minus. ये हमें क्या करना होगा, current year के subscription से minus करना है. Okay, so less outstanding subscription of last year, it is 9,000. Total will be 91,300. Now outstanding subscription of current year is 10,000. Now this is outstanding income of current year. ये हमारे current year का outstanding income होगा. Okay, and that's why we have to give two effect. Any adjustment which is related with current year we have to give two effect. पिछले साल का अगर additional information है तो उसका हमें एक ही effect देना है. But if adjustment is related with current year, then we will have to give two effect. Now this is outstanding subscription of current year. Okay, and that's why it is related with income of current year. ये हमारे current year का income है. That's why we will add outstanding subscription of current year in income side. So here we will add outstanding subscription of
current year. It is rupees 10,000. Total will be 1,01,300. Okay. Now second effect of outstanding subscription will be transferred to asset side. Okay. करंट ईयर का अगर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है तो हमें उसका इफेक्ट देना है असेट साइड में. सो इन असेट साइड वी विल राइट आउटस्टैंडिंग subscription of current year. It is rupees 10,000. Okay. Now second adjustment, subscription received in advance. Advance means फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए जो सब्सक्रिप्शन मिला है हमें उसे कहा जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. नाउ इन लास्ट ईयर वी हैव रिसीव्ड 8,000 रुपीज एज अ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस. पिछले साल हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था 8,000 रुपीज. नाउ दैट एडवांस सब्सक्रिप्शन विच इज रिसीव्ड इन लास्ट ईयर इज फॉर करंट ईयर. पिछले साल जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा और पिछले साल का जो नेक्स्ट ईयर है वो है करंट ईयर. ओके. सो दिस इज इनकम ऑफ द करंट ईयर. ये हमारे करंट ईयर का इनकम है. ओके. एंड दैट्स व्हाई वी विल ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर ड्यूरिंग द करंट ईयर. करंट ईयर में वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारे करंट ईयर का इनकम होगा जो हमें पिछले साल में एडवांस में मिला था. ओके. सो हियर वी विल राइट ऐड advance subscription received in last year, LY. It is rupees 8,000. So our total is 1,09,300. Okay. Now here we have to give on the one effect for advance subscription received in last year. ये पिछले साल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इसके लिए हमने उसका खाली एक ही इफेक्ट दिया है. ओके. नाउ वी हैव रिसीव्ड 6,000 rupees during the current year as a subscription received in advance. That means subscription received in advance during the current year is rupees 6,000. current year में हमें 6,000 rupees एडवांस मिला है. ओके. सो ये हमारे करंट ईयर का इनकम नहीं है. ओके. इट इज इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर और फॉलोइंग ईयर. ओके. नाउ टू इफेक्ट वी हैव टू गिव हियर. ये इस एडजस्टमेंट के हमें दो इफेक्ट देने हैं. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग दी करंट ईयर रुपीज 6,000 वी हैव टू गिव टू इफेक्ट बिकॉज दिस एडजस्टमेंट इज रिलेटेड विद करंट ईयर. ओके. नाउ व्हाट टू इफेक्ट वी आर गोइंग टू गिव हियर. हम कौन से दो इफेक्ट यहाँ पे देंगे. दिस इज नॉट द इनकम ऑफ करंट ईयर, दिस इज द इनकम ऑफ फॉलोइंग ईयर और नेक्स्ट ईयर. ओके. एंड दैट्स व्हाई we will less or we will minus advance subscription received during the year. during the year जो भी हमें advance subscription मिला है वो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे. ओके. so we will continue this adjustment here in this portion. ओके. यहाँ पे हम ये adjustment continue कर रहे हैं. so here we will write less
एडवांस सब्सक्रिप्शन received in करंट ईयर। करंट ईयर का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था 6,000 रुपीज, वो हम लेस करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, now we will show amount in outer column because all adjustment which are related with subscription are over. Okay, now here we have got amount of rupees 1,09,300. 1,09,300 minus 6,000, it will be 1,03,300. Now first effect of subscription received in advance, we have less from income side. income side से हमने ये subscription less किया क्योंकि वो हमारे next year का income था। Okay, now we will give second effect. Second effect we will show in liability side. If subscription or any type of income is received in advance, अगर कोई भी इनकम हमें एडवांस में मिलता है, नेक्स्ट ईयर के लिए मिलता है ड्यूरिंग द करंट ईयर, अगर करंट ईयर में कोई भी इनकम हमें फॉलोइंग ईयर के लिए मिलता है या नेक्स्ट ईयर के लिए मिलता है तो वो हमारी लायबिलिटी है। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर of rupees 6,000 will be transferred to liability side. So in liability side we will write subscription received in advance during current year, it is rupees 6,000. Okay, now once again I will explain you both additional information. Outstanding subscription of last year, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन से हमने क्या किया, माइनस किया। ओके, बिकॉज इट इज नॉट द इनकम ऑफ करंट ईयर, ये हमारे करंट ईयर का इनकम नहीं था। नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ऑफ रुपीज 10,000, वी हैव टू गिव टू इफेक्ट। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, वो सबसे पहले हमें इनकम साइड में ऐड करना है। ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट वी हैव टू शो इन असेट साइड। ओके, नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, पिछले साल में हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था। नाउ दिस इज द इनकम ऑफ करंट ईयर, पिछले साल में जो एडवांस मिला होगा वो करंट ईयर के लिए आया होगा, इट इज द इनकम ऑफ करंट ईयर एंड दैट्स व्हाई वी हैव एडेड, हमने उसे ऐड किया है सब्सक्रिप्शन के अंदर इनकम साइड में। नाउ नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर और फॉलोइंग ईयर। ड्यूरिंग द ईयर वी हैव रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑफ रुपीज 6,000, हमें करंट ईयर के अंदर 6,000 रुपीज एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है। सो दिस इज द इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव लेस और minus or deducted that advance subscription received during the current year. And second effect we have shown in liability side because subscription received in advance during the current year is our liability. Okay, so that is how we have solved adjustments related to subscription. Now next is building. You can see here amount of building as per last year is 13 lakh. Current year value, closing value of building is also 13 lakh. Okay, so there is no increase or decrease in the value of building. Okay, building की value ना तो बढ़ी है ना तो कम हो चुकी है, it is same. Okay, so closing value हमें वैसी की वैसे कहाँ शो करनी है, asset side में लिखनी है. Okay, so here we in asset side will write building, it is rupees 13 lakh. Now you cannot call it as a proper adjustment. ये हम इसे adjustment नहीं कर सकते. It is given just for our information. ये हमें दी गई information थी.
Next is investment. Amount of building, sorry, investment is as per last year or as per opening balance. Amount of investment is 2 lakh. Similarly, closing balance of investment is 2 lakh. Current year का closing balance investment का भी कितना है 2 लाख रुपीस. पिछले साल का भी बैलेंस था इन्वेस्टमेंट का 2 लाख, इस साल भी वो बैलेंस दिख रहा है 2 लाख. दैट मीन्स देयर इज नो एडिशन और देयर इज नो purchase of building during the year, or there is no sale of, sorry, there is no purchase or addition of investment during the year, or there is no sale of investment during the year. During the year में हमने ना तो इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है ना तो इन्वेस्टमेंट को सेल किया है. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे इन पेमेंट साइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिल्डिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन, एंड दैट्स व्हाई बोथ अमाउंट आर equal or same. Okay, so this is also just information given to us, and that amount of building closing balance we will transfer to asset side. So here in asset side we will write investment, amount of investment is rupees 2 lakhs. Next is capital fund. Now amount of capital fund, it's opening balance. Okay, लास्ट ईयर का ये बैलेंस है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था और ये करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा. सो इट विल बी ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड. सो इन लायबिलिटी साइड वी विल राइट कैपिटल फंड 10,13,000. Now closing balance, here question mark is given. Now at the time of solving all adjustment we will get closing balance of capital fund. Closing balance capital fund का फाइंड आउट करने के लिए हमें सबके सब एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है. सम को सॉल्व करने के बाद we will get amount of closing balance of capital fund. Next is building fund. Now building fund, opening balance of building fund is 5 lakh. We will transfer it to the liability side. बिल्डिंग फंड को हम liability साइड में ट्रांसफर करेंगे. ओके, सो हियर वी विल राइट बिल्डिंग फंड ऑफ रुपीज 5 lakh. Now keep in mind, any type of fund, library fund, tournament fund, building fund, you have to show in liability side, because that amount will be used for a specific purpose. For example, building fund will be utilized for construction of building in future. Okay, so any type of fund, building fund, donation, library fund, tournament fund, we have to show in liability side, because that fund is received for a specific purpose. Okay, now for second year or for current year, question mark is given. Okay, now after solving or after doing posting of donation for building fund, we will get final amount of building fund. Okay, so here question mark is given. लास्ट ईयर की बिल्डिंग फंड का वैल्यू था, एज पर लास्ट ईयर बिल्डिंग फंड का वैल्यू है 5 lakh. नाउ इन दिस बिल्डिंग फंड वी विल ऐड donation for building fund. In receipt side we have received 1,50,000 as a donation for building fund. building fund के लिए हमें donation मिला है 1,50,000. so here we will add it. okay, building fund में हम उस donation को ऐड करेंगे because ये donation हमें building fund के लिए मिला है. okay, so it will increase the amount of building fund. ये डोनेशन बिल्डिंग फंड का अमाउंट बढ़ाएगा, एंड दैट्स व्हाई वी विल ऐड दिस अमाउंट इन बिल्डिंग फंड. सो हियर वी विल राइट ऐड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. It is rupees 1,50,000
50,000. So total will be 6,50,000. Okay. So this is how we have solved all additional information which are given in the question. Now we will do posting of all receipts and payments. First is to balance brought down. We are not going to consider it. हम इसे consider नहीं करेंगे. Next is subscription. Already we have solved adjustments related with subscription. Next is entrance fees. We will transfer in income side. So here we will write by entrance fees it is rupees 1,700. Next is life membership fees revenue 18,000. So here we will write by life membership fees $18,000. Next is sale of old newspaper 500. So here we will write by sale of old newspapers 500 rupees. Next is donation for building fund. Already we have added donation for building fund in building fund. Okay. So once again there is no need to do posting. फिर से उसकी posting करने की जरूरत नहीं है. Next is payment side. Furniture. Now furniture is capital expenditure. Okay, and that's why it will be transferred to asset side. So in asset side we will write furniture. Amount of furniture is 27,000. Next is medicines. Medicine will be transferred to expenditure side. Okay. So here in expenditure side, we will write to medicine. Amount of medicine is 7,000. Next is honorarium to the doctor. Payment given to the doctor. It will transfer to expenditure side. So here we will write to honorarium to doctors. Amount is 80,000. Next is salary to staff. It will be transferred to expenditure side. So once again we will write to salary to staff. It is rupees 15,000. Next is general expenses 8,000 rupees. It will be also transferred to expenditure side. So here we will write to general expenses it is rupees 8,000. Next is surgical instrument. Surgical instrument will be transferred to asset side. So in asset side we will write surgical instrument. It is rupees 60,000. Next is fixed deposit 80,000.
Fixed deposit is our asset. And next is closing balance, that is by balance carried down. It's a closing balance of cash, so it will be transferred to asset side. So in asset side we will write cash balance or on the cash. It is rupees 5,500. Okay, so this is how we have done posting of all receipts and payment, and we have solved all adjustment. Okay, now next step will be we will close income and expenditure account. First of all, we will do total of both sides. Okay, now in this question, total of income is greater than total of expenditure. This is expenditure side. ओके यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़िए, क्योंकि उतना पोर्शन हमारा एम्प्टी है. ओके, नाउ यू कैन सी हियर टोटल ऑफ इनकम साइड इज 1,23,500. Total of income side is 1,23,500. This is the total of income side. Okay, whereas total of expenditure side, this total of expenditure side is 1,10,000. Okay, now you can see here total of income side is greater than total of expenditure side. Income का total expenditure के total से ज्यादा है, so there will be a surplus. Okay, so surplus will be 13,500. Okay, first of all we will write this total in both sides. 1,23,500. Here also we will write 1,23,500. इनकम का टोटल एक्सपेंडिचर के टोटल से ज्यादा था. ओके, सो हियर इन एक्सपेंडिचर साइड वी विल गेट द डिफरेंस. ओके, हमें एक्सपेंडिचर साइड में डिफरेंस मिलेगा. ओके, सो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ सरप्लस. इन ब्रैकेट वी विल राइट एक्सेस of income over expenditure. Excess of income over expenditure, it is called as a surplus. It means income का total expenditure से ज्यादा है, उसे surplus कहा जाता है. Surplus is 13,500. Now this surplus we will add in capital fund. Surplus is a positive balance. Okay, so हमें capital fund में surplus को add करना है. Add surplus. It is rupees 13,500. Okay, now we will do the total of capital fund. Now total of capital fund will be 10,26,500. It is 10,26,500. Okay, now we will close balance sheet. First of all we will write total of liability side. Now total of liability side is 16,82,500. Similarly, total of asset side is also 16,82,500. Okay, so this is how total of both sides of balance sheet, that is asset side and liability side, both total are equal. That means our balance sheet is tallied now. Okay, so this is how we have solved
question number 19, page number 110 from our BK textbook. Once again, thank you so much for watching my video.